तो आज क्लास में देखा कि तुम क्लाइमेट आउ सॉइल ऑफ ओडिशा। तो ओडिशार क्लाइमेट केमती जमती आम जानले कि तुम आमर ट्रॉपिक्स देकी जाइए तुम गुजरात राजस्थान एमती देकी ट्रॉपिक्स तुम प्राय कहीपर ओडिशार जस्ट टिके उपरू देकी जाइए। तो तार क्लाइमेटिक कंडीशन तुम कहीपर दैट इज ए सब ट्रॉपिकल टाइप ऑफ क्लाइमेट एंड प्राय टाइप ऑफ द जिनस कि तुम बहुत टाइम एठू साइक्लोन भी आसे तुमको बेसी कनसेप्ट भी मुझे कि साइक्लोन तुम केमती क्रिएट हुए दैट द फोर्स दैट कि जमती गोटे समुद्र एटा है गोटे समुद्र जदि गोटे पार्ट तार माने अनसर्टनली तार हिट हो गला ताको कहीपर कि 27 डिग्री सेल्सियस पाखापाखि होगला बट तार चारिपटर टेम्परेचर एजाए भी तुम कम थी कहीपर कि तुम 20 डिग्री टेम्परेचर। तो तुम जानते हो जो तुम टेम्परेचर कम थी से तुम प्रेशर हाई थी और जो तुम टेम्परेचर हाई थी तुम प्रेशर कम थी दैट इज ए कॉन्सेप्ट दैट इज विंड सब तुम हाई प्रेशर रु लो प्रेशर को मूव करे। सो देयर इज ए विंड दैट इज कम टुवर्ड्स द लो प्रेशर दैट इज क्रिएटिंग बाय द अनसर्टेनिटी जोटा तुम हिट हो जाता तो सेठू तुम कौन ना जिनस जो टाइम आसिया स्टार्ट कला तापर गोटे टाइम तुम से आउट कला कौन ना कोरियलिस फोर्स। तो सेटा कौन ना जमी तुमको कही कि गोटे आमर इक्वेटर रु जोटा आम नॉर्थ आड़ को जावा तो नॉर्थ रे बा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर रे तुम एवरी ऑब्जेक्ट राइट आड़ को डिफ्लेक्ट हुए आउ तुम सदर्न हेमिस्फीयर एवरी ऑब्जेक्ट तुम लेफ्ट आड़ को डिफ्लेक्ट हुए। तो सही वाइज जमी आम इंडिया टोटल लाए कर दैट इज द नॉर्थ ईस्ट रे। तो सही हिसाब से आम इंडिया टोटल आम नॉर्थ ही लिखा जाए तुम लंगिट्यूडनाली आ तुम लाटिट्यूडनाली ईस्ट ही लिखा जाए कारण आम इंडिया टोटल नॉर्थ ईस्ट रे ही लाए करुच्ची। ओके ठीक अच्छे देन से टाइम जो टाइम सबू विंड ताड़ को आसिया लगिला तो जेहेतु नॉर्दर्न हेमिस्फीयर अच्छी सबू विंड एवं डिफ्लेक्ट हो दैट इज ऑफ द राइट दैट इज ऑफ द राइट दैट इज ऑफ द राइट। तो एमती करी गोटे स्पाइराल हो जाए दैट स्पाइराल इज कम इनटू एन आई तापर तुम एठू साइक्लोन इंड्यूस्ड हो जाए एंड साइक्लोन पर जो लैटेंट हिट तार थाए उपरको नहीं जाए ऊपर जैसे जैसे लैटेंट हिट सरीनी बादल फॉर्म हो जाए दैट इज स्प्रेड अकॉर्ड जो टाइम तुम लैंडफॉल हुए तुमको दि जाए तुम ऑरेंज रेड तुम ग्रीन वार्निंग कि तुम सब जहाँ तुम वार्निंग सिस्टम थाए तुम 500 किलोमीटर टू नहीं कि 100 किलोमीटर जाए ये सब तुम स्टडी हुए 100 किलोमीटर जो टाइम आसीगला तुम रेड वार्निंग लगी। ओके देन सेम टाइप हम देखा कि क्लाइमेटिक कंडीशन आमर केमती। तो ये जो सर्कमस्टांस आम कहते दैट इज द साइक्लोन दैट इज पार्ट ऑफ तुम कहीपर वेदर मुझे कहीपर कि आवर ओडिशा इज ए साइक्लोनियल टाइप ऑफ क्लाइमेट दैट इज नॉट अवर बिकॉज आवर इंडिया इज overall it is a monsoonal type of climate having some influence of the western disturbances that is come from the jet stream of जोटी कि तुम मेडिटेरियन सी रु किसी मोइस्चर उठिक नहीं आसूँ एंड से तुम कहीपर कि जून मस आड़ को मार्च रु माने जून आड़ को तार समर थाए पूरा जून आड़ को तुम स्टार्ट हो जाए कौन मनसून। तो तुम कहीपर कि आमर इंडिया गोटे मनसूनल टाइप ऑफ क्लाइमेट कारण क्लाइमेट कौन जार 30 इयर्स वेदर जार 30 इयर्स लेखाएं जदि मुझे आवरेज ने प्रतिदिन प्रति वर्ष तांकर सेम क्लाइमेट बा सेम जिनस सब वर्ष आसुव तुम कहीपर कि क्लाइमेट होगला। तो क्लाइमेट इज ए लंग टर्म फिनोमिना तो से भाई आम इंडिया हूँ मनसूनल टाइप ऑफ क्लाइमेट। तो तार इफेक्ट जमी आम हिस्ट्री देखते कि प्रति सारा जहाँ इंडिया इफेक्ट है आम ओडिशा किसी ना किसी समस्त इफेक्ट पड़ी कहीपर कि तुम एनसिएंट स्टोन एज टू स्टार्ट करके तुम मॉडर्न इंडिपेंडेंस जाए सबुठी आम ओडिशार किसी ना किसी इफेक्ट तुम इंडिया रही आसी अच्छी। तो से भाया तुम क्लाइमेट भी किसी हिस्सा देखा कौन हो कि तुम समर सीजन केमती हुए फास्ट आम डिस्कस करवा कि तुम जो क्लाइमेट ऑफ ओडिशा रोचे आमर देख फास्ट ऑफ ऑल कहीपर कि आम गोटे ट्रॉपिकल जमती कहली कि ये तुम ट्रॉपिक्स पाखे अच्छी प्लस तुम इंडिया मनसून क्लाइमेट। तो तुम आपको मिसेक कह सर्ट रे आवर इंडिया इज ए ट्रॉपिकल एंड मनसूनल टाइप ऑफ क्लाइमेट। ओके दैट इज इन सर्ट जब एग्जाम आसो एत जिन आसोनी दैट टर्म यू हैव टू रिमेंबर द ट्रॉपिकल एंड द मनसूनल टाइप ऑफ क्लाइमेट। तो वेदर इन द ओडिशा इज ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय द सी। तो सी तुम ये कौन अच्छी द बे ऑफ बेंगल सी तुम अच्छी जोटी तुम साइक्लोन आसे और तुम कोस्टल एरिया केतटा अच्छी जमी तुम कहीपर केन्द्रापड़ा होगला कि तुम बालेश्वर होगला तुम केतटा कोस्टल एरियाज भी अच्छी एंड ड्यू टू द ट्रॉपिकल मनसूनल टाइप द समर्स आर वेरी हॉट एंड मनसून आर अप्रोक्सीमेटली हॉट एंड वेट एंड विंटर्स आर प्रेजेंट माने समशीतोष्ण अंचल तुम कहीपर। ओके देन जो यार समर सीजन को आसबि तुम समर पाए यार मार्च रू नहीं कि जून जाए चले टेम्परेचर इज क्वाइट हाई ड्यूरिंग दिस रीजन दैट मैक्सिमम टेम्परेचर तुम 40 डिग्री सेल्सियस जाए
ଆଉ ତମର ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା ଲାଇକ୍ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ସମ୍ବଲପୁର, ବରଗଡ଼, ବଲାଙ୍ଗୀର, କଳାହାଣ୍ଡି, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଦି ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଟେମ୍ପରେଚର ବିଟୱିନ୍ 40 to 46। ଏମିତି କାହିଁକି ହୁଏ ନା ତମର କୋଷ୍ଟାଲ ଏରିଆ ଯେତିକି ଏଠି ତମର ପ୍ରାୟତଃ ସମଶୀତୋଷ୍ଣ ଅଞ୍ଚଳରେ ରୁହେ, କାରଣ ତମେ ଜାଣିଥିବ କି ଏଠି ତମର ଡାଇ ୟୁରିନାଲ ଟେମ୍ପରେଚର ଏତେ ବି ମାନେ टाइप ऑफ ठीक ठाक ही रहे। ये शीत दिन बेसी शीत हुए कि खरा दिन बेसी खरा हुए कि वर्षा दिन भी तुम समशीतोष्ण टाइप जिन ही रुए। तो ताठू जोड़ा आम वेस्टर्न भाग में आसमती सुंदरगढ़ होगा, संबलपुर होगा, बरगढ़ होगा, बलांगीर होगा, एसबू जिनस टी अधिका हिट हुए कारण कोस्टल टू टी दूर अच्छा। देन तुम ये कम देखा ना कि रेनी सीजन केमती स्टार्ट होती। रेनी सीजन तुम ये ओडिशा स्टार्ट करे केतु ना तुम जुलाई रू नहीं लास्ट तुम कहीपर कि मिड अक्टोबर जाए तुम रेनी सीजन चले। बट एमती कहीं हुए गोटे जिन देख तुमको मुझे कहली कि जून मसर आम वर्षा दिन स्टार्ट हुए, बट मुझे कहली कि ये लिखिली कौन हम कि जुलाई रू टिल मिड अक्टोबर हुए। तो जब जून ने एंट्री मारला मनसून तो आम पाखक आसवाक से कहीं जुलाई मस जाए नेला ताको तुम लंग क्लासेस कंप्लीट कर पार। एवं तो मुझे सर्टकट जस्ट कहीदे कि सब जिन आईटीसी जेड उपर ही थाए जो सब हाई इनसोलेशन तुम रिसीव हुए। तो सही इनसोलेशन जो टाइम आम आईटीसी जेड मूव हुए देख गोटे इयर आम आईटीसी जेड मात्र 2 टाइम्स मूव हुए आ 2 थर से इक्वेटर देकी जाए, थरे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को जाए आ थरे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न को जाए। तो जो टाइम तुम आईटीसी जेड मूव हुए ता सहित से सब विंड को लेकिन जाए, कारण आईटीसी जेड कौन जोटि तुम इनसोलेशन हाईएस्ट रिसीव होगा सहित तुम सब ईस्टर्लीज गुड़ाक इक्वेटर पाखे जी तुम ईस्टर्लीज जहाँ तुम ट्रेड विंड कह ये सब मर्ज होती। तो जो टाइम आईटीसी जेड मूव हो जाए मैंने तुम मनसून को जो मनसूनाल विंड को सहित उपरक उपरू नहीं जाए। तो ताको केरला ओडिशा को पहुँचा पूरा मसे टाइम लगी जाए क्या आईटीसी जेड को से अनुसार से जो टाइम मोशन नहीं जाए। जदि आम एरिया कहूँ कि पहाड़ न था आम एरिया वर्षा हुआ ना जमीक बांग्लादेश कि तार टोपोग्राफिकल फीचर्स ना बोली तुम हिल्स एरिया से वर्षा बेसी हुए ना। तो जदि आम वेस्टर्न घाट अच्छी तो आमर एवरग्रीन फॉरेस्ट अच्छी और से एत एनरिचमेंट बायोडाइवर्सिटी अच्छी ना से किसी हो ना। देन the variability of rainfall is below 15% in southwest part of the state, and that is variable of the rainfall increasing 15 to 20%. That's the information that is right. तापर ओडिशा रिसीव द रेनफॉल ड्यू टू दि साउथ वेस्ट मनसून। अच्छा साउथ वेस्ट मनसून पुणी कह तुम जो मनसून को मुझे डिवाइड करी लिखिदि नॉर्थ साउथ ईस्ट आ वेस्ट। जदि मुझे कहबी कि गोटे मनसून तुम एपटू आसको कह कि देटा तुम साउथ ईस्ट मनसून। जदि मनसून एपटू आसो कह कि साउथ वेस्ट मनसून। जदि मनसून एपटू आसो नॉर्थ वेस्ट मनसून, दैट इज द नॉर्थ ईस्ट मनसून। आ किसी भर कनसेप्ट ना साउथ वेस्ट मनसून कथा कहीं कहूँ तुम साउथ ईस्ट मनसून एक्चुअली तुम जो टाइम इक्वेटर क्रॉस करे तुम साउथ ईस्ट ही आसे तुम साउथ ईस्ट मनसून ना दियो। जो तुम मस्क्रीन हाई पाखे जो टाइम हिटअप होगा तिब्बत सॉरी जो टाइम जो कौन जो डिप्रेशन मान कहीपर हाई प्रेशर जो टाइम क्रिएट होगा जो टाइम तिब्बत रे लो प्रेशर क्रिएट होता तो हाई प्रेशर लो प्रेशर को गोटे विंड फ्लो है। तो से जो विंड फ्लो है ताकू ही तुम से जो डायरेक्शन टाक साउथ वेस्ट डायरेक्शन कहुए बोली तुम साउथ वेस्ट मनसून ना दियो। बट जो टाइम रिटर्न करे तुम देख नॉर्थ ईस्ट आड़ू ही डायरेक्शन अच्छी तो तुम रिट्रीट मनसून को तुम नॉर्थ ईस्ट मनसून बोली ना दे पार आ कि ना बस ये कनसेप्ट। देन द तुम which is monsoon covers the coastal plain state between the 5th June to the 10th June तुम भीतर तुम कोस्टल एरिया को तुम पहुँच जाए। बाय द जुलाई द होल ऑफ द स्टेल कम अंडर द इनफ्लुएंस देख लो तुम जो टाइम कोस्टल एरिया को पहुँच सारा पर भी गोटे मास तक लगिगला कि सबुठी कभर कर कारण तुम आईटी जेड आस्ते आस्ते मूव करुच्ची ना बादल को नहीं किए जीव फुंकुन ना। बाय द मिड अक्टोबर एंड साउथ वेस्ट मनसून विड्रॉ फ्रॉम द रीजन कम्प्लीटली। तो मिड अक्टोबर तापर तुम ओडिशा विंटर गायब हो जाए तुम सॉरी रेनफॉल गायब हो जाए। ड्यूरिंग दिस रीजन द कोस्टल एरिया स्टेट मैक्सिमम साइक्लोन्स दैट इज एवरेज रेनफॉल इज 200 सेंटीमीटर 200 सेंटीमीटर पार कि गोटे एवरग्रीन फॉरेस्ट लगभग ठीक होता है डिसीडियस फॉरेस्ट टाइप रही जाए कारण एवरग्रीन फॉरेस्ट तुम कहीपर जो तुम 250 सेंटीमीटर तुम 400 सेंटीमीटर जाए भी तुम वर्षा हो तो से तुम एवरग्रीन फॉरेस्ट सब देखा जाए जोटी तुम सब अधिक बायो माने कौन डाइवर्सिटी देखा जाए जमी तुम कौ एरिया अच्छी नॉर्थ ईस्ट एरिया अच्छी तुम वेस्टर्न घाट्स अच्छी तुम अंडमान अच्छी ये तुम सब बायोलॉजिकल हॉटस्पॉट्स हम इंडिया तीन टाँग है जमी तुम ब्रुनेई छाड़। देन दिन द जुलाई ड्यूरिंग दिस सीजन तुम जान एक्सपीरियंस ड्यूरिंग द जुलाई एंड सेप्टेम्बर। जुलाई इज द वेटेस्ट मंथ सब वेटेस्ट मंथ हो तुम जुलाई एंड द मेजर रिवर गेट फ्लोड ड्यूरिंग दिस मंथ। रिवर चैप्टर में देखिले कौ रिवर तुम बुढ़ाबाला बैतरणी महानदी सब सुबर्ण जहाँ सब सुबर्ण नाला तो से सब जिन। Then the humidity of the monsoon season is very high in the Odisha and relatively
the humidity of the coastal area is about the 75%। ବୁଝିପାରୁଛ ଦେଖ ହ୍ୟୁମିଡ଼ିଟି ରହିଲେ ସିଷ୍ଟମ୍ କ'ଣ ହୁଏ ତୁମେ ଶୁଣିଥିବ ପାରାଦ୍ୱୀପରେ ଦେଖିବ ତୁମର ସମୁଦ୍ର ପାଖରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ବି ଟ୍ରକ୍ ଏଠି ରୁହନ୍ତି ନାହିଁ କ'ଣ ପାଇଁ ନା କୌଣସି ପ୍ରକାର ବଡ଼ ବଡ଼ ମେସିନାରୀ ଜିନିଷ ତୁମ ସମୁଦ୍ର ପାଖରେ ରହନ୍ତି ନାହିଁ ସମୁଦ୍ର ଦୂରକୁ ନେଇଯାଆନ୍ତି ଆଣ୍ଡ ହ୍ୱାଟ୍ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ହାପେନ୍ କି ତୁମର ସମୁଦ୍ର ପାଖରେ ଯେଉଁ ପବନ ବହୁଛି ସେଥିରେ ଲୁଣି ଜିନିଷ ଥାଏ ହେଲା ତ ଲୁଣି ପାଣି ଯେଉଁ ଟାଇମ୍ରେ ତୁମର ଫ୍ଲୋ ହୁଏ ସେ ଟାଇମ୍ରେ ତୁମର ଯେଉଁ କହିପାରିବ ତୁମର ସେଇ ଯେଉଁ ମେସିନ୍ ଦେହରେ ଜଙ୍ଗ ଲାଗିକି ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ से जो जिनस गुड़ाक खराब करदिए तो से जो तुम जिनस देन तापर यही सीजन तुम कौ जगह तुम फ्लड भी हो जाए आम ओडिशा रे कौ जगह तुम फ्लड भी हो जाए तुम देखी द ह्यूमिडिटी इन द मनसून सीजन इज वेरी हाई इन ओडिशा एंड रिलेटिव ह्यूमिडिटी इन द कोस्टल एरिया इज 75%। the humidity percentage in the vast inland region is the Odisha about the 16%। तापर हाई annual rainfall region सब तुम कौन कौन अच्छे हाई annual rainfall तुम कहीपर नॉर्थ ओडिशा and the catchment basin of the बुढ़ाबड़ंग बैतरणी ब्राह्मणी ईब नदी ये तुम सब हाईएस्ट रेनफॉल रीजन एंड ट्रिब्यूटरी ऑफ दी महानदी तुम ईब नदी ओम ईब ओंग जोंग ये सब जानते हो तुम महानदी गोटे गोटे ट्रिब्यूटरी दिस रीजन फॉल्स इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ द मयूरभंज northern and the western Kendujhar district, the Lahara subdivision of the Anugur, Sundargarh and the eastern Sambalpur district. This high annual rainfall is the result of the cyclone during the monsoon season. Then the southeast Odisha has received the highest rainfall. Okay, the high annual rainfall above 155 centimeter तमर हुए नॉर्दर्न ओडिशा आड़े बुढ़ाबाड़ बैतरणी से तमर कैटचमेंट एरिया तुम कहीपर केन्द्रापड़ा कटक भद्रक सुकिंदा महानदी ये सब जिन छाड़ देन तुम लो आनुआल रेनफॉल तुम सब कौ मानने कहीपर कि तुम से जो सॉरी तुम छाड़ दे गली जोटा कि तुम साउथ ईस्ट ओडिशा also receive highest rainfall like the horseshoe like area of the low reach of the Brahmani, Mahanadi, Bhadrak, Sukinda, Kendrapada, Katak, that is low and the annual region रेनफॉल रिजन्स किए अच्छा तुम लो आनुआल रेनफॉल जोटि तुम 130 सेंटीमीटर 135 सेंटीमीटर कम वर्षा हुए इट कवर्स द कैटचमेंट एरिया बंशधारा ऋषिकुल्या ए स्मॉल स्ट्रेच ऑफ द लैंड ऑफ ईस्ट ऑफ द लेक चिलिका एंड द ईस्टर्न कोरापुट एंड द गंजाम द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द पुरी डिस्ट्रिक्ट एंड द अपर तेल catchment basin, the rolling upland of the Burger Plain and the middle Brahmani catchment basin. These regions neither lie directly in the path of the cyclone nor monsoonal wind that move the Bay of Bengal in a very concise way. Okay. Then winter season. The winter season in Odisha it start from the mid October. Mid October ru तमरो winter season start हुए जोटा कि तमरो फेब्रुआरी रे एंड हो जाए। ओके अक्टोबर नहीं कि फेब्रुआरी जाए तुम ये कौन आम एक्सपीरियंस हुए विंटर जमीक आम ये मसर विंटर चलते प्राय तुम टे खरा स्टार्ट हो गला द वेदर इन दिस सीजन रेंजेस फ्रॉम दी 25 डिग्री टू 18 डिग्री सेल्सियस इन द कोस्टल एरिया ड्यू टू दी मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस ऑफ द सी से जो कहली ना ये तुम एत भी टेम्परेचर कमे ना कि शीत दिन भी ठीक ठाक रहे खरा दिन भी बेसी उपरको जाए क्या शब्द था कि तुम कहीपर कि समशीतोष्ण अंचल तुमको गोटे देखा मिले। ओके एंड ड्यू टू एंड इन द interiors of the temperature 1 minute it is the 13:30 acha in the interior of the temperature dips to 7 degree Celsius and winter is not very severe except in some areas like Koraput Kandhamal ये तुम टेम्परेचर 3 ରୁ 4 डिग्री सेल्सियस भी जाए मैंने आम देखिपारे कि तुम ओडिशा गोटे इवन गोटे स्टेट होते भी ये तुम प्रायतः प्राय सब जगह तुम किसी ना कि अलग अलग विंटर इफेक्ट अलग अलग वर्षा इफेक्ट अलग अलग तुम खरा इफेक्ट भी देखा मिले ड्यू टू तुम भेजिटेशन कवर कारण से तुम बहुत सारा गच रही जाऊँगी तुम कहीपर कि तुम खास कर तुम आसो जो टाइम केन्दुझर एरिया जो टाइम पहाड़ पहाड़ एरिया को तुम जीव कि तुम से जो चंदका फंदका एरिया को तुम जीव तुम देखिपार कि तुम विंटर सीजन प्रायतः अधिका ठंडा लगे कारण से वेजिटेशन बहुत भल थाए एंड दिस स्टेट ऑल्सो एक्सपीरियंस लिटिल रेनफॉल ड्यूरिंग द विंटर सीजन इन द मंथ्स ऑफ द अक्टोबर एंड नवंबर जनवरी फेब्रुआरी एंड रिमेनिंग ड्राई द सदर्न वेस्टर्न पार्ट ऑफ द स्टेट ऑल्सो एक्सपीरियंस द ठंडा साउथ। ओके देन द लोकल सीजनल डिविजन इन ओडिशा ओडिशार लोकल सीजनल डिविजन तुम केमती तुम फास्ट हूँ तुम ग्रीष्म ऋतु जोटा कि तुम कहती समय दैट इज बैशाख ज्येष्ठ जोटा कि तुम नहीं एप्रिल ठू नहीं मिड जून जाए
एप्रिल टू नहीं कि जून जाए तुम रहिबो ग्रीष्म जाको तुम बैशाख बोली कह वर्षा को आषाढ़ बोली कह तुम कहीपर ये जोटा तुम आठमनटा को तुम भाद्रव बोली कह आशून्य मसर माने सरी सेटा माने भूल कहली तुमको एटा तुम सब मास ना सरी एटा सब तुम मास ना एटा तुम सब ये ना तुम ये ग्रीष्म ऋतु आम जोड़ा ओडिया ग्रीष्म ऋतु बैशाख रु ज्येष्ठ जाए थाए है जो एप्रिल टू जून जाए वर्षा ऋतु आषाढ़ टू श्रावण जाए थाए जून टू अक्टोबर तापर तुम तुम आठमन ऋतु तुम थाए तुम से भाद्रव टू आश्विन जाए कहीपर अगस्ट टू अक्टोबर जाए देन तुम हेमंत शीत बसंत तुम शिशिर जोड़ा तुम ग्रीष्म वर्षा शरत हेमंत शीत बसंत तुम स्प्रिंग सीजन फाल्गुन रु चैत्र जाए थाए ओके तो एमती समस्त तुम सब थाए डिस्ट्रीब्यूशन होमर तापर रेनफॉल इन ओडिशा इज मेनली एक्सपीरियंस ड्यूरिंग द मानसून एंड द विंटर सीजन and the account the rainfall of the state is discussed below अच्छा कौन है जेमती monsoon rainfall the monsoon rainfall is considered as important rainfall in the state it is because it is directly control the crop production condition of the Odisha in the monsoon season when the rainfall is above 140 centimeter it is considered as the high rainfall and if it is less than 120 centimeter it is considered as the low rainfall this is hardly sufficient for a good and paddy harvest okay तो आमर मनसूनल एरिया रे आमर भी किस टाइप वर्षा हुए इट इज बिकज इज डायरेक्टली कंट्रोल द क्रॉप प्रोडक्शन आमर जानते हो आमर प्राय इंडिया रे प्रायतः सब तुम मनसून उपर डिपेंडेंट होगी था तमें आमर ये 140 सेंटीमीटर भी अधिका वर्षा हेल्ले कहीपर कि रिलेटिवली आमर हाई रेनफॉल होती हाई मनसून रिजन तुम किए किए अच्छा तुम जी तुम आम टे पूर्व देखिले तुम पोर्सन ऑफ द ईव रिवर बैतरणी कैटाचमेंट एरिया तंकर देन तुम ईस्टर्न संबलपुर वेस्टर्न सुंदरगढ़ सदर सब डिविजन ऑफ द केउंझर फुलबाणी फिरिंगिया ये तुम हाई रेनफॉल रिसीव हुए लो रेनफॉल तुम साउथ वेस्ट ओडिशा रिसीव द लो रेनफॉल ड्यूरिंग द मानसून part of the Baitharani basin extend to the north east of the Talcher receive low rainfall okay during this season acha winter rainfall is held in the growth of the rabi crop in Odisha if there is a total rainfall above 5 centimeter it is considered high winter rainfall and less than 2.5 सेंटीमीटर इज कंसिडर as the low winter rainfall तो जब ये 5 सेंटीमीटर भी अधिक वर्षा हो कहीपर कि विंटर रेनफॉल हिसाब से आम डिवाइड करचे 5 आउ 2.5 तो एरिया ऑफ द हाई एंड द लो विंटर आर एज फॉलोज कौन सब अच्छा तो हाई विंटर रेनफॉल इज लाइज बिटवीन द नॉर्थ ओडिशा बारिपदा इन द ईस्ट टू द सुंदरगढ़ इन द वेस्ट ओके कहीपर कि तुम नॉर्थ ओडिशार बारिपदा ईस्ट रे आ तुम सुंदरगढ़ तुम वेस्ट रे सुंदरगढ़ तुम वेस्ट रे ये तुम हाई एंड द लो रेनफॉल आर एज फॉलोज तुम नॉर्थ रे माने जो ये दुटा तुम सब हाई रेनफॉल एंड दिस रीजन कवर्स नॉर्थ ईस्ट पोर्सन ऑफ द संबलपुर नॉर्थ पार्ट ऑफ द केउंझर एंड ऑलमोस्ट होल ऑफ द मयूरभंज एंड द मिडिल पोर्सन ऑफ द बालेश्वर डिस्ट्रिक्ट तो ये तुम से लाइन में तुम हाई रेनफॉल हुए कोस्टल एरिया जमी तुम पुरी रहीगला खोर्धा रहीगला ये तुम 5 सेंटीमीटर अधिक वर्षा हुए द प्लाटेउ लाइक द फुलबाणी फिरिंगिया ये भी तुम हाइस्ट विंटर रेनफॉल हुए एंड लो विंटर रेनफॉल रीजन लाइक द साउथ वेस्ट ओडिशा इट कवर्स द डिस्ट्रिक्ट ऑफ द कोरापुट इट इज पर्टिकुलरली सिंगल क्रॉप रीजन तापर क्लाइमेटिक रीजन आम ओडिशा रे केमती अच्छी डिफरेंट जियोग्राफिकर्स आम इंडिया रो क्लाइमेट को क्लासिफाई करछंती ओपेन्स द क्लाइमेट ओडिशा इज ट्रॉपिकल सावना टाइप क्लाइमेट लाइक AW जो कोपेन्स क्लासिफिकेशन भी क्लास देखे अच्छे अपलोडेड अच्छी कोपेन्स क्लासिफिकेशन कौन सर्टकट कहीदे ये तुम कौन कर कोपेन्स जड़े तुम क्लाइमेट को स्टडी करते जे कि तुम प्रति क्लाइमेट को किसी किसी कोड वर्ड रे से डिपेंड करते जे यही कोड वर्ड जो थी सब सेम टाइप रो क्लाइमेट धर यहाँ गोटे है ना ये वन कोड वर्ड 82 तो जो सब 222 लिखाई मैंने सब सेम टाइप ऑफ क्लाइमेट थी तुम कोपेन्स बसिक क्लासिफिकेशन करते भी कवर अच्छी
देन तमर अकॉर्डिंग टू दी ये जो तमर ना कौन थ्रॉन व्हिट क्लासिफिकेशन द क्लाइमेट ऑफ ओडिशा कम्स अंडर दी सब ह्यूमिड टाइप क्लाइमेट आउ तमर एफजी चैटर्जी क्लासिफिकेशन ने द कोस्टल रीजन ऑफ द ओडिशा इंक्लूड इन ट्रॉपिकल सावना टाइप क्लाइमेट ओके तो क्लाइमेटिक कंडीशन भी विभिन्न विभिन्न लोकों नजर विभिन्न विभिन्न से क्लासिफिकेशन कर आग्रो क्लाइमेटिक जोन ऑफ ओडिशा तमर केमती अछि तमर आग्रो क्लाइमेटिक जोन हिसाब से तमर नॉर्थ वेस्टर्न प्लेट्यू नॉर्थ सेंट्रल प्लेट्यू ओके कौन कौन अच्छी देख नॉर्थ वेस्टर्न प्लाटेव सब किए जाती नॉर्थ वेस्टर्न प्लाटेव कथा जो तुम कह तुम सुंदरगढ़ जाए पार्ट ऑफ देवघर संबलपुर झारसुगुड़ा हॉट एंड मोइस्ट एंड सब ह्यूमिड एंड रेड ब्राउन फॉरेस्ट रेड येलो एंड मिक्स रेड ब्लैक ये सब तुम देखा मिले तुम कहीपर हमको ये सब तुम ये सॉइल ग्रुप देखा मिले ओके रेड सॉइल ब्राउन सॉइल तुम कहीपर कि सब तुम आयरन कंटेंट सॉइल प्राय अधिका थाए दैट इज द नॉर्थ वेस्टर्न प्लेट्यू मैंने कहीपर नॉर्थ वेस्टर्न प्लेट्यू तुम सुंदरगढ़ देवगढ़ झारसुगुड़ा ए रीजन हॉट आउ मोइस्ट सब ह्यूमिड सेंट्रल नॉर्थ सेंट्रल प्लेट्यू लाइक तुम मयूरभंज केउंझर एस्पेक्ट दी आंध्रपुर एंड घसीपुरा ब्लॉक ये तुम हॉट आउ मोइस्ट सब ह्यूमिड देखा मिले जेन तुम रेड येलो से तुम लैटरेटिक सॉइल तुम कहीपर माकड़ा पत्थर को जो लिचिंग हो सॉइल होता लैटरेटिक सॉइल कहे देन तुम नॉर्थ ईस्टर्न कोस्टल प्लेन तुम बालेश्वर भद्रक पार्ट ऑफ जाजपुर हाटाड़ी ब्लॉक ऑफ द केउंझर मोइस्ट सब ह्यूमिड देन तुम रेड डेल्टाइटिक एलुवियल कोस्टल एलुवियल सैलाइन ये सब रीजन तुम देखा मिले देन तुम ईस्ट आउ तुम साउथ ईस्टर्न कोस्टल प्लेन लाइक केन्द्रापड़ा खुर्दा पार्ट ऑफ द कटक पुरी नयागढ़ गंजाम जगतसिंहपुर हॉट एंड ह्यूमिड टाइप ऑफ क्लाइमेट देखा मिले जो इज सैलाइन रेड एंड मिक्स रेड एंड ब्लैक एंड लैटरेटिक एंड एलुवियल टाइप ऑफ क्लाइमेट देखा मिले तापर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट नॉर्थ ईस्टर्न घाटे फुलबाणी रायगढ़ गजपति द पार्ट ऑफ गंजाम स्मॉल पैचेस ऑफ कोरापुट हॉट एंड मोस्ट सब ह्यूमिड तापर ब्राउन फॉरेस्ट रेड मिक्सड रेड ब्लैक एंड दी लैटरेटिक एलुवियल ये सब जिन देखा मिले है देन तुम साउथर्न ईस्टर्न घाट में तुम मालकानगिरी पार्ट ऑफ केउंझर वार्म ह्यूमिड रेड ब्लैक लैटरेटिक सॉइल देखने मिले वेस्टर्न अंडुलेटिंग जोन लाइक कलाहांडी नुआपड़ा ये तुम हॉट एंड ह्यूमिड सब क्लाइमेट देखा मिले रेड मिक्स सॉइल ब्लैक सॉइल मैंने अल्प अल्प ब्लैक सॉइल देखा मिले जो तुम कपा चाष भल हुए देन तुम आगु ये सब तुम आगु क्लाइमेटिक जोन्स है देन तुम वेस्टर्न सेंट्रल ट्रेडलैंड बरगढ़ बलांगीर तुम बौद्ध सोनपुर पार्ट ऑफ संबलपुर झारसुगुड़ा तुम हॉट एंड मोस्ट ह्यूमिड क्लाइमेट देखा मिले रेड येलो रेड ब्लैक ये सब जिन देखा मिले मिड सेंट्रल टेबल लैंड तुम अनुगुल ढेंकानाल पार्ट ऑफ द कटक जाजपुर जाजपुर साइड तुम हॉट एंड मोस्ट ह्यूमिड टाइप ऑफ क्लाइमेट देखा मिले ये तुम प्राय एलुवियल रेड मिक्स रेड लैटरेटिक प्राय सब प्रकार जो भल भल सब सॉइल टाइप देखा मिले देन तुम साइक्लोन ऑफ द ओडिशा ए साइक्लोन इज ए भेरी लार्ज केम तुमको कहली तुमको डिस्क्रिप्शन देली कौन केमती तुम साइक्लोन केटे आम कौट कौन सब अवस्थित अच्छी साइक्लोन इन ओडिशा तुम केमती कौन आसे ड्यू टू द कोस्टल लोकेशन ओडिशार बे ऑफ बेंगल द सम स्टेट फेसेस द ट्रॉपिकल साइक्लोन दैट causes massive destruction and most of the severe cyclone occurred in 25 माने तुम जो महाबात्या होता 25 अक्टोबर 4 नवेम्बर जाए 1969 जो महाबात्या होता सुपर साइक्लोन कह जाए नोन आज दी ओडिशा साइक्लोन अच्छा कौन कौन सब आसी तुम साइक्लोन कहीपर ओडिशा भितर तितली आसाला तुम 2018 तुम तितली आसाला साउथ ईस्ट ओडिशा गंजाम गजपति की हुडहुड आसाला तुम 2014 इट वाज ए वेरी सिवियर साइक्लोनिक कंडीशन 16टा डिस्ट्रिक्ट अफेक्ट होते प्राय तुम 6 दिन चलता ये तुम 4 दिन चलता तुम फाइलिन आसाला फाइलिन भी तुम से आसाला 2013 से तुम से 5 रु नहीं 14 अक्टोबर जाए प्राय 9 दिन जाए चलता गोपालपुर गंजाम डिस्ट्रिक्ट हेविली अफेक्टेड होता ओके देन आम ओडिशा को आसवा सब केतटा साइक्लोन तितली हुडहुड हेलेन फाइलिन भिआईरू बिजली एंड ओडिशा साइक्लोन ऑफ 1919 है तो सुपर साइक्लोन गोटे आसाला है सॉइल इन ओडिशा ओडिशार सॉइल तुम केमती अच्छे सॉइल इज वेरी इंपोर्टेंट एंड वैल्यूएबल रिसोर्स फॉर एवरी ह्यूमन बीइंग द मेजर फैक्टर व्हिच डिटरमाइन द सॉइल कैरेक्टरिस्टिक आर parent rock materials and climatic
ଅପୋର୍ ଜିନିଷ କାରଣ ଦେଖ ଯେଉଁଠି ପ୍ୟାରେଣ୍ଟର ଧର ପାହାଡ଼ ତୁମ ଘର ପାଖରେ ଦେଖିବ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ପାହାଡ଼ ଥିବ ତୁମ ବିଲରେ ଦେଖିବ ସେଇ ପ୍ରକାର ମାଟି ଥିବ କାରଣ ଏ ହିଁ ତୁମର ୱେଦର ଫେଦର ହେଇକି ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷ ନେଇକି ତୁମର ବଡ଼ ପଥର ହେଲା ଟିକେ ଛୋଟ ପଥର ହେଲା ହେଇ ଘଷି ହେଇ ତୁମର ମାଟି ହେଇଯାଇଛି ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ସଏଲ୍ ଅଫ୍ ଦ ଓଡ଼ିଶା ଦ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟ ରକ୍ ଆଜ୍ materials found in the state are like heterogeneous due to the which the average productivity is many crops is low. Acha. Then the classification in the soil. Soil of the Odisha can be classified into two groups. The classification on the basis of the formation, the classification on the basis of the relief feature. The relief feature out formation basis रे ताको टू टाइप रे डिवाइड ହେଇଛି on the basis of the formation. On the basis of the formation, the soil of the Odisha are classified as follows: transported, residual. This soil is mixed of the eroded material and is heterogeneous in character. ताको तमे को that is the transported soil. Soil ଯେତେବେଳେ eroded material ସହିତ mix ହେବ in heterogeneous is called in character ମାନେ ବହୁତ ସାରା soil ତା ଭିତରେ ମିଶିକି ଥିବ. Then the residual soil, the soil जोटा कि erode ହେଇ साइला ପରେ जोटा बंची ଯାଇଥିବ, the different agent of erosion, this soil is occurs as interflows mountain plateaus in Odisha. Okay, अच्छा. On the basis of the relief feature, our co-प्रकार सब soil अच्छी, that is the red soil and the lateritic soil, in the red and yellow soil, coastal saline, alluvial soil, deltatic soil, black soil, mixed red soil and black soil, and the brown forest soil, red soil. This phenomena due to the upper Dharwar series by the process of the decomposition of the silicate during the rain. ତମର ଧରୱାର ତମର କେଉଁଠି ଅଛି କହିପାରିବ? କର୍ଣ୍ଣାଟକ ଆଡ଼େ ଧରୱାର ଅଛି, ଇଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଧରୱାର, ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଧରୱାର, ତାକୁ ଗୋଟେ ଡିଭିଜନ୍ ହେଇଛି ତାର ପ୍ରୋସ୍ପେକ୍ଟ ଗ୍ରାନାଇଟ୍ ଆଣ୍ଡ ତା ଚିତ୍ରଦୁର୍ଗା ଗ୍ରୁପ୍, ସେସବୁ କଥା ତମର ଛାଡ଼। ବଟ୍ ତମର କହୁଛି ସେସବୁ ତମର ଯେଉଁ ଏଇ ଯେଉଁ ସଏଲ୍ଟା ଆସିଛି ରେ ସଏଲ୍ଟା ତାର ଫର୍ମେସନ୍ ହେଇଛି ଏଇ ଯେଉଁ ଆଇରନ୍ ମାନେ ଡ୍ୟୁ ଟୁ ଦି ଆଇରନ୍ ଡିପୋଜିସନ୍ ଅଫ୍ ଦି ଅପର ଧରୱାର, ଯେଉଁ ଆଇରନ୍ ଡିପୋଜିସନ୍ ହେଇଛି ସେଇ ଯେଉଁ ତମର ଏଠି ରେଡ୍ ସଏଲ୍ କ୍ରିଏଟ୍ ହେଇଛି। By the process of the decomposition of the silicate during the rain, the red soil is characterized by the coarse texture and single grain, weakly granular structure surface soil. The soil is highly porous with low available water holding capacity. This soil covers 7.14 million hectare land. It covers the largest area of the state. This soil is found in the district of the Koraput, Rayagada, Nabarangpur, Malkanagiri, କେଉଁଝର, ଗଞ୍ଜାମ, କଳାହାଣ୍ଡି, ନୂଆପଡ଼ା, ବଲାଙ୍ଗୀର, ଢେଙ୍କାନାଳ, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ଓଡ଼ିଶା କହିପାରିବ ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ ଦ ଥିଙ୍ଗ ଏଠି ତୁମକୁ ରେଡ୍ ସଏଲ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଟିକେ ଆଇରନ୍ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ସଏଲ୍ ଟିକେ ଅଧିକ ଥାଏ। ଦି ସଏଲ୍ ଇଜ୍ ନନ୍ ସାଲାଇନ୍ ଆଣ୍ଡ ଦ ରେଡ୍ କଲର୍ ଇଜ୍ ଡ୍ୟୁ ଟୁ ଦ ପ୍ରେଜେନ୍ସ ଅଫ୍ ଦି ଆଇରନ୍ ଅକ୍ସାଇଡ୍। The soil is moderately acidic and generally deficient in nitrogen and organic matters like and the molybdenum. Nitrogen nahi, organic matters nahi, ଆଉ ତମର molybdenum nahi, ଆଉ ତମର moderately acidic ଥାଏ and tasmic this happen to is exposed to the leaching and crops like the rice, finger millet, minor millet, potato, brinjal and your brinjal and your fruit trees such as the mango, jackfruit, guava, papaya, sapota are grown in the soil. Se soil le esabu jinso adhika grow karanti. Then your red and yellow soil. These soil are found in undulating and rolling terrain which differs in the depth, texture and color. These soil cover 5 million hectare of land of Odisha and covers second largest area in the Odisha. अच्छा तमर दिस सॉइल ओवर माने प्राय 5 मिलियन हेक्टर तमर प्राय रेड एंड येलो सॉइल अच्छी जोटा कि तुम संबलपुर, बरगढ़, देवगढ़, सुंदरगढ़ डिस्ट्रिक्ट रे सब जिनस तुम डिवाइड अच्छी। दिस सॉइल आर डिवाइडेड इनटू द सॉइल अपलैंड एरियाज एंड सॉइल ऑफ द लोलैंड एरियाज। सॉइल ऑफ द अपलैंड इज कंपैरेटिवली कोर्सर इन टेक्सचर हैविंग रेड एंड येलो एंड द रेड कलर। द शैलो इन डेप्थ एंड आर well drained. These soil are comparatively more acidic, से जो ये more drain ही जानती, those are of the low reaches and the soil of the lowland areas are formed on alluvial deposit and have very fine texture and so pale yellow, greenish and olive shades. This soil sometimes shows some snow effect of molting patches and irregular color due to the submerges in monsoon season and dying thereafter. Okay, तो माने जो टाइम मनसून सीजन में समर जाकि ड्राए हो जाती तापर तुम ये इफेक्ट सब देखा जाए तुम and crop grown in upland like the rice, finger millet, sugarcane, potato, brinjal, tomato crops like paddy, pulses, fruit like mango, guava
बनाना प्राय तुम ये जिन सब हुए ब्लैक सॉइल 0.96 मिलियन हेक्टर अच्छी लो लाइंग बेसिक रॉक बेसिक मीन तुम गोटे रॉक एसिडिक अच्छी गोटे बेसिक अच्छी बेसिक तुम सिलिका परसेंटेज पूरा कम थाए दिस सॉइल इज 0.96 मिलियन हेक्टर एंड लैंड इज फाउंड पोडिकली sporadically in the district of the Puri, Ganjam, Malkanagiri, Kalahandi, Nuapada, Balangir, Sonpur, Bauth, Sambalpur, Bargad and Anugul. The soil exhibits deep and wide cracks in summer season. The soil has a pH value of 7.5 to 8.5. The texture is clay and structure is annular blocky. The soil is low to moderate in nitrogen, potassium and presence of the titaniferous magnetite. The soil is low to moderate in nitrogen and potassium and presence of the titaniferous magnetite and humid bituminous give the soil a black color. Importance crop grown in this soil are rice, jawar, bajra, maize, Bengal gram, sunflower, mustard, cotton. That like the thing that you know. Lateritic soil that means that is a very hot and wet tropical areas तुमको देखा जाए कारण lateritic soil meaning ही हो जो तुम से लीचिंग है कि जिनसे कणा कणा ये माकड़ा पत्थर टाइप तक laterite rock और soil है this is rich in alumina manganese and iron lateritic soil that is कोई पे से तुम 40% और भी कम iron देखा जाए प्राय भल iron देखा जाए तो जितने माने normal soil को तो iron percentage बहुत अधिक होता है is found on high level plateau and the hilly areas receives high rainfall like tomorrow eastern odisha eastern ghat of the odisha it covered 0.7 million hectares land in the odisha district of puri khurda noyagad katak ढेंकानाल केउंझर मयूरभंज संबलपुर of odisha this soil is highly permeable and poor in nitrogen phosphorus potassium and calcium it is generally acidic in nature. The crop like groundnut, pulses, rice, finger millet, minor millet, sesame, potato, fruits like mango, jackfruit, banana, guava, sapota are grown in this soil. তারপরে deltatic alluvial soil. The texture of the soil varies from coast to clay মানে କହିପାରିବ sand to clay deltatic alluvial soil depending upon the geomorphological flood plain and typical alluvial carried by the river water and structure of the soil ମାନେ କ'ଣ ଯେ ଯେଉଁ river ନେଇକି ସବୁ ଆସନ୍ତି ମାଟି ତାହେଲେ କୌଣସି ଟପୋଗ୍ରାଫିକାଲ ଫିଚର ଯୋଗୁଁ ଏସବୁ ସଏଲ୍ ଫର୍ମେସନ୍ ହୁଅନ୍ତି ଯିଏକି 0.767 ହେକ୍ଟର ରଖନ୍ତି ବାଲେଶ୍ୱର ଭଦ୍ରକ ଯାଜପୁର କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜଗତସିଂହପୁର କଟକ ପୁରୀ ଗଜପତି ଗଞ୍ଜାମ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ତୁମର କିଛି କିଛି ଜାଗାରେ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ soil are four division ଯେମିତି ତୁମର ନର୍ଥ ବାଲେଶ୍ୱର ରିଜନ୍ ହାଭ୍ ସାଣ୍ଡି ଆଣ୍ଡ ସାଣ୍ଡି ଲୋମି ସଏଲ୍ ସାଣ୍ଡି ଲୋମି ମାନେ ଯେଉଁଟାକି ତୁମ ସାଣ୍ଡ ଆଉ କ୍ଲେ ମିଶିକି ଥିବ ଏଇଠି ତୁମ ଚାଷ ଭଲ ହୁଏ ଡେଲ୍ଟା ଅଫ୍ ଦି ବୈତରଣୀ ଆଣ୍ଡ ଦି ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ହାଭିଂ ଦ ସଏଲ୍ which varies from clay loam to the stips clay and delta of the mahanadi having soil which stratified into the clay and silt sand and Rusikolia delta having soil which is more sandy in nature. The soil are fertile but soil with low nitrogen phosphorus is also found. The fertility also decreases if the soil are not recharged regularly by the flooding and important crop like the rice, groundnut, mustard, sesame, potato, black gram vegetable এটা ସବୁ ଅଛି ତାପରେ coastal saline ଆଉ the alluvial soil these soil include the high soluble coastal soil this region is salinity of soil is highly inclusion of the silty tidal water from the sea through the creek. These soil have salt like the chloride, sulfate of sodium, magnesium and to a lesser extent of the calcium and the potassium. These soil are found along on the coastal belt of the state is the narrow strip extending 5 to 25 km inward. This soil covers 0.254 million hectares of land and these soil are found in the district of Baleshwar, Bhadrak, Jagatsinghpur, Kendrapada, Puri, Khurda and the Ganjam district. The texture is clay to clay loam and are columnar in structure. The soil of the Chilika lake is also affected by the salt due to the flooding of the salt lake water during the monsoon. तापर तो important crop it सब कौन कौन हुए like the rice, mustard, barley, linseed, chili, sugar beet, tomato, spinach and the cotton. Then tomorrow brown forest soil tomorrow कौन this soil is found in the forest of the जो
cover region, this soil is covered 0.17 million hectares of the land. It occurs in the district of the Fulbani, Kandhamal, Rayagada, part of the Ganjam and Nagada. This is brown to grey brown and light texture and acidic in reaction, that is your brown forest soil. Then our mixed red soil or black soil, there is found association with the both red and the black together and occurs the patches of the predominant red soil. Black soil तुमको सेमती कहते that is from your reunion hotspot, that is the India that is going when collides with the Asia. ଏସବୁ ଟାଇମ୍ ଭିତରେ ତାଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ପାର୍ଟଟା ଇରୋଜନ୍ ହେଇକି ଗୋଟେ ପ୍ଲାଟିଉ ଟାଇପ୍ ରହିଗଲା ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ ଦ ଥିଙ୍ଗସ୍। ଏଇ ଯେଉଁ ଲାଭାଟା ବେସିକ୍ ଲାଭା ଥିଲା, ସେ ବେସିକ୍ ଲାଭାର ଯେଉଁ ସଏଲ୍ ହେଲା ତାକୁ ତୁମେ ବ୍ଲାକ୍ ସଏଲ୍ ବୋଲି କୁହ, ଯେଉଁଠି ତୁମର କପା ଚାଷ ଭଲ ହୁଏ। ଦିସ୍ ସଏଲ୍ ଇଜ୍ କପର୍ସ 0.16 ମିଲିୟନ୍ ହେକ୍ଟର, ଯେଉଁଟା ତୁମର ହାଏଷ୍ଟ କରି ତୁମର ପେନିସୁଲାରେ ହିଁ ଥାଏ। ଦିସ୍ ସଏଲ୍ ଇଜ୍ ଫାଉଣ୍ଡ ଇନ୍ ଦ ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଅଫ୍ ସମ୍ବଲପୁର, ବରଗଡ଼, ସୋନପୁର, ବଲାଙ୍ଗୀର। The texture of this soil is light to medium, where black soil is rich in the calcium, red soil is rich in the iron and which provides the quaternary information of the soil। तापर इंपोर्टेंट क्रॉप एटी सब कौन कौन हुए तुम कहीपर राइस, सुगर केन, मेज, रागी, ग्राउंडनेट, इसमें ये सब जिनस एटी हुए। अच्छा तो मैप आउथरे देखि दियो तुमर जतिक सब अच्छी जोन ने सॉइल टाइप गुड़ा तुम रेड सॉइल देख पार्थ तुम कोरापुट, बलांगीर, कलाहांडी, फुलबाणी प्राय तुम जब पचार जीव तुम ओडिशा एनालिसिस सब अधिका सॉइल कौ टाइप देखा जाए, दैट इज योर रेड सॉइल। रेड सॉइल पर सब अधिका तुम देखा जाए दैट इज योर ब्लैक सॉइल आई थिंक। देखीद तुम टे एनालिसिस कर देखीद बस गोटे हाएस्ट तुम रेड सॉइल देखा जाए प्राय तुम मिक्सिंग टाइप ही अच्छे है सबुठ तुम जोटा रेड ब्लैक मिसा सॉइल जो मिसा जो सॉइलटा प्राय तुम सब कम देखा प्राय तुम कहीपर एपटू मयूरभंज, सुंदरगढ़, झारसुगुड़ा, देवगढ़, संबलपुर एपट प्लाटेउ तुम ढेंकानाल एपट रहा कोस्टाल रीजन देखी दियो तुम भद्रक, केन्द्रापड़ा, जगतसिंहपुर, पुरी, गजपति। अच्छा अच्छा छाड़ तापर प्रोब्लेम एंड द मैनेजमेंट ऑफ द सॉइल ऑन द ओडिशा कौन कौन सब तुम प्रोब्लेम रोचे जमी तुम लो फर्टिलिटी सॉरी लो फर्टाइल एसिडिक सॉइल। देख सॉइल एसिडिक हेल्ले कौन हम जमी तुम कहले गोटे एग्जांपल लैटेराइटिक सॉइल मीन्स तुम जो देखु माकड़ा पत्थर थर से कौन हुए एक्चुअली लिचिंग हुए। लिचिंग फल तार जो था भर जो मिनराल्स से जाई सारा पर तार होल सब क्रिएट हो जाए। तो सी जो छोट छोट पत्थर हो भांगिकी जो टाइम सॉइल हम तुम तब लैटेराइटिक सॉइल कहीपर तुम से भाई केतटा सॉइल तुम कहीपर कि माने एसिडिक सॉइल थिले से एरिया एते फर्टाइल नुह कारण से एरिया तुम एसिडिक एरिया तुम कौन लिचिंग संभावना बहुत थाए तुम से जो मेन मिनराल गुड़ा सब से वाश आउट हो जाती। तो से जो से एरिया सब तुम लो फर्टाइल ओके से सब एरिया तापर तुम मेन प्रोब्लेम तुम रोज लो लैंड सॉइल इज पोजिंग दी आयरन टॉक्सिसिटी। ऑफकोर्स तुम जो रेड सॉइल और येलो सॉइल देखुच लैटेराइटिक सॉइल देखुच ये तुम आयरन ही थाए गोटे गोटे जगार तुम इंडिया देखिए गोटे गोटे घर तुम देखी आगुरी बोरिंग पानी तुम आयरन बाहर कारण से सब जिन तुम माटी ही अधिका तुम रेड सॉइल माने लैटेराइटिक सॉइल। तो से जो ये सब जिन तुम अधिका देखा जाए एंड इम्प्रूविंग द ड्रेनेज फैसिलिटी बाय कंस्ट्रक्टिंग डीप ड्रेन्स एंड चेकिंग छाड़। देन द कोस्टल सॉल्ट अफेक्टेड सॉइल ये तुम गोटे कनसेप्ट कौन आउ गए आम प्रोब्लेम देखा मिलूँ सी वाटर इंट्रूजन द टाइप ऑफ द थिंग जो सी तुम ये अच्छी ये जो हेवी किसी कंस्ट्रक्शन हो जो फ्रेश वाटर अच्छे दैट इज माने मे बी कंटामिनेट बाय द सॉल्ट वाटर दैट इज द प्रॉब्लम ऑफ द सॉल्ट वाटर इंट्रूजन दैट इज ए टॉपिक ऑफ योर। तापर कोस्टल सॉल्ट अफेक्टेड सॉइल लाइक ड्यूरिंग द रेनी सीजन द सॉल्ट कंटेंट दिस सॉइल बिकम्स डाइल्यूशन छाड़ से जो तुम सॉल्ट जो रहा है केम तुम से मैंने तुम मल्टीपल क्वेश्चन के टाइम देखीद। अच्छा फर्स्ट क्वेश्चन तार ओडिशा हाज व्हिच टाइप ऑफ क्लाइमेट जमी आम जानले ओडिशा हाज वेरी ट्रॉपिकल टाइप ऑफ क्लाइमेट। व्हेन डज द समर सीजन कॉमन्स इन ओडिशा समर सीजन केबे ओडिशा रे आसे बा एंट्री हुए
that is your March masare, and in which month the whole state comes under the influence of the southwest monsoon ତମ ଓଡ଼ିଶାକୁ କେବେ ମାନେ ପହଞ୍ଚେ ତମେ କହିପାରିବ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଜୁନ୍ ମାସରେ ଦେଖ ଜୁନ୍ ମାସରେ ଆସେ ବଟ୍ ପୁରା ତାକୁ କଭର୍ ନେଇଯିବାକୁ ଜୁଲାଇ ମାସ ଲାଗିଯାଏ in which season some coastal part of the Odisha experience the cyclone and the tornado that is the rainy season. The average rainfall experienced during the July September in Odisha is that is a 200 centimeter. The winter are not severe in Odisha except the Koraput and the Kandhamar ଏଠି ଛାଡ଼ିକି ପ୍ରାୟ ତମର ଆଉ ସବୁ ଏରିଆରେ ଏତେ ସିଭିଅର୍ ନଥାଏ ଆଣ୍ଡ ସେୟାର୍ଟ ଯେଉଁଟାକି ତୁମେ କହୁଛନ୍ତି ସେୟାର୍ଟ କ'ଣ ଲେଖିଛି ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଶରତ ଋତୁ ତାକୁ ଯେଉଁ ଅଟମନ୍ ବୋଲି କୁହ ଶରତ ଋତୁ ଇଜ୍ ପ୍ରିଭିଲ୍ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶା ଫ୍ରମ୍ that is from mid August to mid October, which among the following region in Odisha express the high monsoon rainfall, that is the Fulbani and the Efiringia, which area is Odisha is receive more than 5 centimeter of rainfall during the winter. 5 सेंटीमीटर ରୁ ଅଧିକା କିଏ ପାଆନ୍ତି ଦେଖିଥିଲେ ଆମେ ବି ତ ପୁରୀ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଆଡ଼େ ପ୍ରାୟ ତୁମର ଅଧିକା ହୁଏ ଆଉ ତୁମର ଫୁଲବାଣୀରେ ବି ଅଧିକା ହୁଏ ବି ଏନ୍ ସି ଆଣ୍ଡ ଆକର୍ଡ଼ିଂ ଟୁ ଦି କୋପେନ୍ସ କ୍ଲାସିଫିକେସନ୍ ହ୍ୱାଟ୍ ଇନ୍ ଦ କ୍ଲାଇମେଟିକ୍ କଣ୍ଡିସନ୍ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ କେଉଁ ଟାଇପ୍ର କ୍ଲାସିଫିକେସନ୍ ମାନେ କ୍ଲାଇମେଟ୍ ଅଛି କୋପେନ୍ସଙ୍କ ୱାଇଜ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଟ୍ରପିକାଲ୍ ସାଭାନା ଟାଇପ୍ କ୍ଲାଇମେଟ୍ then which among the following cyclone have hit Odisha in 2018 ने ओडिशा को कौ साइक्लोन हिट करथिला दैट इज द साइक्लोन तितली सुपर साइक्लोन स्टॉर्म दैट इज क्रिएटेड इन एप्रिल मासरे एप्रिल 14 रु 17 इन सॉरी ना सुपर साइक्लोन बा दैट इज अक्टोबर 25 अक्टोबर 4 to 4 नवंबर दैट इज 1999 then which of the following is the most heterogeneous nature in Odisha that is the soil of the Odisha is very heterogeneous काहेकि heterogeneous homogeneous heterogeneous कारण that is type of the mixed soil तुम देखियो मिले which of the following soil covers the largest area of the Odisha that is the red soil जेमते मैप रे देखिले which of the following statement is not correct about the red soil its main feature are the coarse texture single grain of the weakly granular structure surface the soil is saline the red soil is due to the presence of the iron oxide and all of the above it's not correct the iron oxide they are not saline the soil is not saline जानते हो कि तुम्हारा coastal region जो हमें प्यास टा देखिले ता coastal region वो छाड़ी की थिला and which of the following soil occurs in the undulating and rolling terrains that is your red and yellow soil then which soil in Odisha is formed as a result of the weathering of the basic rock मान तो तुम्हारा black soil तुम्हें देखी कि मारियो which of the following soil is rich in the aluminum and the iron in the area of the Odisha that is lateritic soil the lateritic soil is found in all of the above माने कोई परिवार कि तुम्हारा कटक ढेंकानाल पुरी सब एरिया तुम lateritic soil देखा मिले the delta area of the state like the North Baleshwar contain which type of the soil तुम्हारा डेल्टा रीजन ऑफ द स्टेट लाइक नॉर्थ बालेश्वर तुम्हारा सैंडी लोमी सॉइल कह कि सैंडी लोम माने किसी परसेंट सैंड थी प्लस क्ले थी तो मैंने बेसी परसेंट सैंड अच्छे बोले ताको सैंडी लोमी कहगला खाली तुम जब सैंड आउ क्ले तुम ठीक परसेंट था लोमी सॉइल कह जाता जोटि तुम एग्रीकल्चर भल हुए एक्चुअली बट सैंडी लोम मैंने कहीपर कि तुम सैंड पोर्सन तुम अधिका अच्छे and which soil losses its मैं तुम which soil losses is the fertility in the soil is not recharged regularly by the flooding that is the deltic alluvial soil okay that is not recharged regularly by the flood which of the following soil is affected by the coastal salt द्वारा कोटा तुम अधिका affected of course तुम coastal saline and the alluvial तुम brown soil is found in brown soil तुम कोटी found way that is in Kandhamar and Sambalpur which soil is in Odisha is rich in calcium
and iron, and the texture is light to medium, that is mixed red and black soil. Which among the following measures taken to check the iron toxicity in the lowland in Odisha? ଆମେ କ'ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଥିଲେ? that is the constructing the embankment across the slope. ଏମିତି ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେବ ଜିନିଷ, embankment ତିଆରି କରିଦେଲେ ସ୍ଲୋପ୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ କ'ଣ ହେବ ଦେଖ, ତୁମର କେଉଁ ଟାଇମ୍ରେ ଜିନିଷ ସାଲାଇନ୍ କେମିତି ହୁଏ, ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଚେଞ୍ଜେସ୍ କେମିତି ହୁଏ, ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା ତୁମର ଷ୍ଟାଟିକ୍ ନଥିବ। ଧର ତୁମ ବିଲ କଥା କହୁଛି ଆଗ୍ରିକଲଚର, ସେଇଟା କ'ଣ ତୁମର ଡେଲି ତୁମର ଫ୍ଲଡ୍ ଆସିକି କି ତୁମର ରିପୋର୍ଟ ଦ୍ୱାରା ଚେଞ୍ଜ ହେଉଛି କି, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ମେଣ୍ଟେନ୍। ବଟ୍ ଯେଉଁ ହିସାବରେ ମୁଁ କହୁଛି କି ପାହାଡ଼ରୁ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା ଆସୁଛି କି, ଯଦି ସେଠି ତୁମର କେଉଁ ଜାଗାରେ ସଲ୍ଟ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ହେଇକି ଥାଏ ତ ସେ ତୁମର ଏରିଆ ସଲ୍ଟ ଆଫେକ୍ଟେଡ଼ ହେବାର ଚାନ୍ସେସ୍ ଥାଏ। ଓକେ, ତ ବାଇ ଦ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟିଂ ଦି ଏମ୍ବାଙ୍କମେଣ୍ଟସ୍ ଆକ୍ରସ୍ ଦି ସ୍ଲୋପ୍ ଆମେ ଏସବୁ ଜିନିଷକୁ ମାନେ ଆଇରନ୍ ଟକ୍ସିସିଟି ଇନ୍ ଦି ଲୋ ସଏଲ୍କୁ ଆମେ ଅଟକେଇ ପାରିବା। ସଲ୍ଟ କଏଲ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଦି ମାନେ ଆଇରନ୍। Consider the following statement like monsoon rainfall directly controls the crop condition in Odisha and monsoon rainfall is considered the high when above 140 centimeter. এটা তোমার 140 নুহ, দ্যাট ইজ 200 সেন্টিমিটর। হাই মানে নুহ না আমার 200 সেন্টিমিটর হল କ'ଣ ମିନ୍। ହାଇ ମାନେ ମୁଁ କ'ଣ କହୁଛି, ଯଦି 140 ସେଣ୍ଟିମିଟରରୁ ଅଧିକ ହେବ ତାକୁ ମୁଁ ହାଇ ରେନ୍ଫଲ୍ କହିବି। ଯଦି 120 ସେଣ୍ଟିମିଟରରୁ କମ୍ ହେଲା ତାକୁ ମୁଁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଲୋ ରେନ୍ଫଲ୍ କହିବି। ତ ଇଟ୍ ଇଜ୍ 240 ଲେଖିଛି, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ 140। only one is right answer। ତାପରେ north monsoon high is less widespread than the annual high of the same region. North monsoon high is less widespread than the annual high of the same region. Second is the in the middle Baitharani basin he was the lowest rainfall। ଏଇଟା ଆମେ ଟିକେ ଟାଇମ୍ ପୂର୍ବରୁ ଦେଖିଲେ କି ତୁମର ମିଡ଼ିଲ୍ରେ ପ୍ରାୟ लो रेनफॉल थाए, दैट इज ठीक। आ तुम नॉर्दर्न मॉनसून इज हाँ तुम हाई रेनफॉल हुए तुम नॉर्थ आड़े, दैट इज द 1 and 2 and right। then the maximum extension of the low annual rainfall is found in the southeast Odisha, that is right। and in the rolling upland of the Bargad plain and the middle Baitharani catchment basin and the low rainfall is encountered। ये टाइम देखिले भी तुम से catchment आड़े rainfall तुम low देखा जाए, that is 1 and 2 are right। then last 3 are the consider the following red mix red and black soil alluvial ଆଉ तुम black ଆଉ brown आंक भितर which of the above soil found in the western undulating zone। एटा तुम कहीपर कि दैट इज एन एनालिटिकल टाइप ऑफ क्वेश्चन। ये 2-3टा क्वेश्चन बाकी सब क्वेश्चन तुम स्टैटिक पार्ट कहीपर कि तुम ओपीएससी लेवल क्वेश्चन तुम कहीपर तुम एसएससी फेसएससी लेवल क्वेश्चन तुम कहीपर तुम ओएसएससी फोएसएससी लेवल क्वेश्चन। देन तुम 19 तुम रेड सॉइल और मिक्सड रेड और ब्लैक सॉइल ये सॉइल तुम देखा जाए वेस्टर्न अंडुलेटिंग जोन में। कंसीडर द फॉलोइंग सॉइल रेड येलो लैटेराइट ब्राउन फॉरेस्ट। ये तुम कौटा देखा जाए तुम संबलपुर डिस्ट्रिक्ट में, संबलपुर डिस्ट्रिक्ट में आंक भितर कौटा देखा जाए संबलपुर डिस्ट्रिक्ट में आम देखिले कि जमी तुम रेड सॉइल देखा जाऊला, येलो सॉइल देखा जाऊला, लैटेराइट सॉइल देखा जाऊला और तुम ब्लैक सॉइल भी देखा जाऊला। देन एबे आगु क्लाइमेटिक जोन सब जहाँ जहाँ अच्छी तार प्लस एबे एत भितर को आसबनी जस्ट फॉर द थिंग एक्सटेंशन वाइज देती। ठीक अच्छे देखिए तुम नॉर्थ वेस्टर्न प्लाटेउ एपटू तुम ए नॉर्थ वेस्टर्न प्लाटेउ तुम कहीपर हॉट एंड मोइस्ट सब ह्यूमिड टाइप ऑफ क्लाइमेट। देन तुम ईस्टर्न घाट हाईलैंड हो तुम वार्म एंड ह्यूमिड टाइप ऑफ क्लाइमेट। देन तुम नॉर्थ ईस्टर्न कोस्टल एरिया तुम हूँ मोस्ट एंड सब ह्यूमिड टाइप ऑफ क्लाइमेट। एंड तुम ईस्टर्न एंड साउथ ईस्टर्न कोस्टल प्लेन हूँ तुम हॉट एंड ह्यूमिड टाइप ऑफ क्लाइमेट। आफ्टर दैट इज योर राइट।